Good morning, students. You learn all formulas for Viva like this profit percent, this and loss percent, this. Profit is equal to selling price minus cost price. Loss is equal to cost price minus selling price. This formula you will learn for Viva. In chapter simple interest, you will learn formula amount is equal to principal plus interest. Interest is equal to amount minus principal. And some formula interest is equal to principal into rate into time upon 100, and principal is equal to this, time is equal to this, and rate of interest is equal to 100 into interest upon principal into time. This formula you learn for your Viva. Some formula this, speed is equal to distance upon time, distance is equal to speed into time, and time is equal to distance upon speed. And definition of speed, the speed of a body is defined as the distance covered by it in a unit time. You will learn this definition also. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इंटू करते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं. ये दोनों चीज़ भी आपको याद रखना है. 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड, एंड 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर. एंड लर्न these formulas. And definition of linear equation you have learned from here. If the variable say x appear in the first degree only, such that x but not x square, x cube, etc., then the equation is a linear equation in x. That is, the degree of the equation is 1. The form of a linear equation in one variable is x is ax plus b is equal to cx plus d, where a, b, c and d are constants. That's all. आपको लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन यहाँ से लेकर इफ से लेकर यहाँ तक लर्न करना है. द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी. इफ आई आस्क व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन यू से ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी. And in chapter angle, you have to learn the definition of angle. Two rays with a common end point form an angle. That's all. ये आपकी एंगल की डेफिनेशन. Two rays which a common end points form an angle. One complete turn is equal to 360 degree. 1 degree is equal to 60 minutes, and 1 minute is equal to 60 seconds. You learn all three things. And all definition: right angle, acute angle, only definition, and obtuse angle, straight angle, reflex angle and zero angle. All definition of these angles. Adjacent angle. Two angles are called adjacent if they have the same vertex, they have a common arms, and their other arms are on different side of the common arm. It is the definition of adjacent angle. After that, linear pair. Two adjacent angles are said to form a linear pair if the sum of their measure is 180 degree. Complementary angle. If the sum of the magnitude of two angles is equal to 90, then the angle are called complementary angles. Example 30 and 60. 30 plus 60 is equal to 90. As a supplementary angle, if the sum of the measure of two angles is equal to 180 degree, then they are called supplementary angles. And each like example 115 and 65. अगर हम 115 और 65 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 180. तो एंगल का ऐसा पेयर जिसका सम 180 हो, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. एग्जाम्पल 115, 65. Definition of parallel line. Two straight lines are said to be parallel to each other if when they are in the same plane and do not meet when produced on both sides. That's all. यहाँ तक आपको डेफिनेशन याद करना है. Some property you have to learn. If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angle are equal. Second property, if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate angle are equal. And third property, this, the distance between two parallel lines is constant. Definition of triangle. A triangle is a closed plane figure bounded by three line segments. That is the definition of triangle. After that, you have to know median of a triangle. A line joining a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side of a triangle is called a median. A triangle has three medians.
Attitude of triangle. An attitude of a triangle is the perpendicular drawn from one vertex of the triangle to the opposite side of the triangle. A triangle has three attitudes. After that, classification of triangle: scalene triangle, isosceles triangle, equilateral triangle, all definition, acute angle triangle, obtuse angle triangle, right angle triangle. इनकी सबकी definition आपको लर्न होनी चाहिए, इनकी सबकी definition आपको याद होनी चाहिए. Property 1, the sum of the three angle of a triangle is 180 degree. After that, Pythagoras theorem. What do you mean by Pythagoras theorem? The square of the hypotenuse is equal to the sum of the square on the other two sides. This is the Pythagoras theorem. द से लेकर साइड्स तक. The square on the hypotenuse is equal to the sum of the square of the on the other two sides. You can give example. AC square is equal to AB square plus BC square. Suppose this is your right angle triangle. मान लीजिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये सी है और ये बी है. तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ये आप समझा सकते हैं. ये राइट एंगल ट्रायंगल है. दिस एंगल इज 90 डिग्री. स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन. द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड interpretation of numerical data is called statistics. Arrayed data. When data are either in ascending or descending order, we call them arrayed data. Frequency. The number of times a particular item occurs in a collection of data is called the frequency of the item. After that, range of data. The difference between the largest observation and the smallest observation in a गिवन डाटा इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डाटा. एग्जाम्पल, गिवन द डाटा. मान लीजिए एक डाटा दिया गया है, इसमें जो बड़ा है सबसे और जो सबसे छोटा है, उन दोनों का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ डाटा. इसमें सबसे बड़ा 27 है, सबसे छोटा 14 है. 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13. दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ डाटा. मीन का फार्मूला. मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मीडियन का फार्मूला. इफ एन इज ऑड, अगर एन ऑड है, देन मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन 2 टी एच ऑब्जर्वेशन. अगर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड में है तो मीडियन का फार्मूला n प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में टी एच ऑब्जर्वेशन. और अगर n आपका इफ n इज इवन, मीडियन इक्वल टू मीन ऑफ द वैल्यू ऑफ द n अपॉन 2 टी एच टर्म, n अपॉन 2 प्लस 1 टी एच टर्म. दैट इज द फार्मूला. दिस इज द फार्मूला. n upon 2 th term plus n upon 2 plus 1 th term upon 2. This is the formula of when n is even. मीडियन इक्वल टू मीन ऑफ द, यहाँ लिखा ना मीन, मीन का मतलब अपॉन 2, मीन ऑफ द वैल्यू ऑफ द n अपॉन 2 th टर्म, n अपॉन 2 प्लस 1 th टर्म. तो आपका ये मेन फार्मूला ये है, n अपॉन 2 th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 th टर्म अपॉन 2. दैट इज द फार्मूला व्हेन n इज इवन. And when is odd, then median equal to n plus 1 upon 2 th observation. And the mode of a set of a data is that observation whose frequency is the largest. It is the definition of mode. All Viva related questions I tell you in this video, so you learn all definitions and all formulas for your Viva. All questions are asked in Viva from these parts which I tell you in this video. Thank you very much.